हाँ जी, अब हम दनांग आ गए हैं। यहाँ के लोग जब गाना गाते हैं तो कहते हैं दनांग 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 दनांग। इस छोटे से गेस्ट हाउस में हम ठहर रहे हैं। अब ज़रा लॉन्ड्री करने जा रहे हैं। गंदे कपड़े भी तो साफ़ करने होते हैं ना। तो मैं तो सोच रहा था कि दनांग बड़ी छोटी सी जगह होगी, मगर ये तो बड़ी डेवलप्ड किस्म की सिटी है। शायद इनकी छोटी छोटी सिटीज़ भी हमारी से बड़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल बड़ा खूबसूरत सा समुंदर, साउथ चाइना सी जो पैसिफिक के साथ जुड़ता है, साथ ही हमारे है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल जाके ज़रा कपड़े धो लें हैं जी। देखें जी, वियतनाम में एक और यूनिक तजर्बा। हम इस छोटे से कैफ़े में आए थे, तो आगे अभी हमने ऑर्डर भी नहीं किया था, तो उसने हमारे सामने आके फ़्रूट की डिश रख दी और उसने कहा देखें जी, मैं आपको पहले वियतनाम के फ़्रूट के बारे में बताना चाहती हूँ। उसने आगे पूरे फ्रूट के बारे में बताया, कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, उसने खुद ही ये कर दिया सब कुछ। और आपके सामने इंटरव्यू है कि उसने हमें फिर बताया कि इसमें विटामिन भी बड़ी बड़ी अच्छी हैं, ये आप खाएं। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हमें वो बता रही थी कि मैंगो कितना ज़बरदस्त होता है। मैंने कहा भाई सानू दस रहे हो मैंगो कितना ज़बरदस्त होता है ना महाविश। मतलब आई थिंक वी हैव द बेस्ट मैंगोज इन द वर्ल्ड। क्या ख्याल है? जी, अब इन ख़ातून ने आके पूरा मेन्यू जो है हमारे साथ डिस्कस किया है। एक एक बात उसने समझाई है कि ये खाना है, ये वो खाना है, ये फलाना खाना है, ढिमकाना खाना है, तो आपने क्या खाना है वगैरह वगैरह। और क्यों माविश, कभी तुमने ऐसे किसी रेस्टोरेंट में दुनिया में देखा है कि ऐसे होता हो? Usually not. है ना, No. नई नई किस्म की चीज़ पाई है, बड़ी Very sweet. Yeah. वेरी फ्रेंडली यू नो। अच्छा जी, हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह आए हैं जो कि इनके लिए एक किस्म की हिस्टोरिक साइट है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे डरावने किस्म के शेर हैं। इन डरावने किस्म के शेरों का मकसद ये है कि यहाँ पे कुछ जिन भूत अगर आ जाएं तो ये डरावने किस्म के शेरों को डरा के भगा दें। ये जनाब वाली एक ऐसी साइट है जहाँ पे एक लेडी बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है। और इस स्टैचू की सिग्निफिकेंस ये है कि फिशरमैन ने कहा कि ये हमें समुंदर में मिला और उधर से हमने बचा लिया, और बचा के हमने फिर इसको पहाड़ पे लगा लिया है, तो हम उसको विज़िट करने आए हैं। अब इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको पता है, मैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उसका, यानी इराक़ की जो तहज़ीब थी पुराने ज़माने की, कदीम इराक़ की, उसमें मेरी बड़ी दिलचस्पी है। और उसमें मैं पढ़ता रहा कि तियामत और मारदूक और इस किस्म के मुख्तलिफ जो डेटीज़ और गॉड्स वगैरह थी उनके दरमियान क्या लड़ाई हुई, और पेट्रियार्की कैसे वहाँ पे इमर्ज की, और किस तरह से बतदरीज जो फीमेल गॉडेसेस थी जिनकी वो वर्शिप किया करते थे उस ज़माने के अंदर, उनको ख़त्म कर दिया गया और मेल गॉड्स जो हैं उनको बेसिकली प्रमोट कर दिया गया। तो मैं अपने होस्ट से पूछ रहा था कि ये बड़ी दिलचस्प किस्म की बात है कि फीमेल बुद्धा का क्या चक्कर है, क्योंकि हमने तो गौतमा बुद्धा का सुना है और वो तो मेल थे ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे बताया कि गौतमा बुद्धा तो सबसे बड़े उस्ताद माने जाते हैं, मगर उसके बाद भी कई मतलब कैटेगरीज हैं बुद्धास की, और वियतनाम के अंदर फीमेल बुद्धा भी हैं। मैंने कहा अच्छा, ये और भी बड़ी हैरान कुन और दिलचस्प किस्म की बात है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि फीमेल गॉडेसेस की वर्शिप जो है वो जारी रही और मेल गॉडेसेस ने उनको रिप्लेस नहीं किया जिस तरह मेसोपोटामिया में हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वियतनाम जो है, और ये गौर से सुनने वाली बात है उनके बकौल, कि कदीम वियतनाम जो है वो एक किस्म की मेट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैंने कहा हाँ भाई साहब, समझ आई मुझे अब, क्योंकि थ्रू आउट जो 4 दिन अब अभी मुझे हुए हैं यहाँ वियतनाम में, मैं यही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही लिबरेटेड, हर, मैंने आपको बताया ज़िंदगी के हर शोबे से उनका ताल्लुक़ है। तो ये ऐसे ही हो सकता है कि अगर कदीम ज़माने से लेकर अब तक यहाँ पे जो ख़वातीन का रोल रहा है फैमिलीज़ के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी, वो बहुत ही ज़्यादा अहम रहा है। ये देखिए जी, अब मैं जो लेडी बुद्धा है उनके करीब आ गया हूँ, और अभी मैं आगे से भी जाके तस्वीर लूँगा। और यहाँ पे देखें एक गार्डन सा बना हुआ है बड़ा मज़ेदार किस्म का, जहाँ पे और बुद्धा के, और जो बुद्धाज हैं, नॉट गौतमा बुद्धा, मगर और जो मुख्तलिफ बुद्धाज हैं उनके स्टैचूज बने हुए हैं। एंड लुक एट दैट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहना चाहिए, मंदिर कह लें इसको आप, या मंदिर तो खैर हिंदुओं का होता है, मगर आप चलें इबादत गाह कह लें। तो वहाँ पे अंदर जो है मुख्तलिफ गोल्ड के स्टैचूज़ नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली गोल्ड के तो नहीं होंगे, ब्रॉन्ज के होंगे, मगर गोल्डन रंग के स्टैचूज़ नज़र आ रहे हैं। और ह्यूज किस्म का ये टेम्पल यहाँ बना हुआ है, और उसके सामने इस तरफ करके ये मैसिव लेडी बुद्धा का स्टैचू है, ये उसकी गेट है। और ये जो पूरा स्टैचू है और जो कासल है, कासल कह रहा हूँ, टेम्पल है,
ये बेसिकली इट्स लुकिंग आउट इनटू द सी, जो कि पैसिफिक ओशन है, उसकी तरफ देख रहा है। एक्चुअली तो ये साउथ चाइना सी है, मगर आपको पता है साउथ चाइना सी आगे जाके पैसिफिक ओशन के साथ मिलता है। तो और वो इसका मकसद यही है, जैसे मेरे होस्ट ने बताया, कि ये जो ज़मीन है, ये जो धरती है, उसको महफूज रखा जाए। और ये जो लेडी बुधा है, ये उन फिशरमैन के लिए और वो तमाम मछेरों के लिए जो कि समुंदर में काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो और ये कि कोई तूफ़ान आए, कोई आंधी आए, कोई समुंदर से कोई सुनामी आए, इन सब चीज़ों से वियतनामीज़ का ये कदीम वियतनामीज़ का ये कहना था कि लेडी बुधा जो है हमें प्रोटेक्ट कर रही है। कैसी दिलचस्प बात है। वाह जी वाह, मज़े किस्म की धूप निकल आई है, मज़ेदार किस्म की। और वो देखें जी, मेरे पीछे लेडी बुधा का स्टैचू है, और काफ़ी बड़ा स्टैचू है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं जितना पीछे जा सकता हूँ जा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिल जाए, मगर इससे ज़्यादा व्यू आपको मिल नहीं सकता। तो इट्स अ मैसिव स्टैचू ऑफ लेडी बुधा। हाँ, अब खड़े हुए हैं तो वो उसको अगर स्टैचू को ही खाली देखो तो लगता है कि एकदम से आपके ऊपर गिर रहा है, क्योंकि पीछे हिल रहा है मगर लग रहा है कि स्टैचू हिल रहा है, तो वो तो आप थोड़ा सा साइड पे होना चाहते हो। Lakes over there of that. So the Buddhism in the south of Vietnam, from the center to the south, is what's being affected a lot by Islamism and Really? also Hinduism. Okay. It was like the gates and the kind of Oh, yes, I the see that. decorations. Yes, I see that. See? That's very much Yeah. Islamic architecture. Yes, exactly. So if you go to the north, you would not see these gates anymore. They're gonna be totally different because like the north is more affected by the Indian Chinese style of Buddhism, and here is like affected like that. So yeah. Okay, in her hand she's holding, they call it a vase, and inside of it we believe that like like a holy kind of water that tastes very sweet, and it would be used to clean, like as a bless, the way for her to bless other people, or like to clean all the evilness out of you. And usually she would bring with her a branch of, what do you call it, willow, a branch of willow. She dip it into that like that vase and make it wet, and then she like spray it Great. on you to give you a bless or something like that. That's great. Yeah. We need a bit of that spring in the world today, don't we? We do. I hope that you understand all of the words that I'm about to talk about right here. So that is called a stupa. And it is like a tower that has many, many floors, usually 7, because to us 7 is magical number. And in that stupa, it's where you burn your joss paper. I see. Now let me explain. Joss paper is the paper where you write down your wish or your prayer to gods and goddesses, to Buddha. And then you burn in that stupa, that tower, to send your wishes and your prayers I see. to the Buddha. And then they come true, Yeah, hopefully. hopefully. So you think I should write down World Revolution and burn it, Yeah, right. Yeah. No, but the traditional style of Buddhism looks like she's shirtless. Okay, yes. But Could be. that is from the old time. That maybe that was back then, but Yeah, there's We lots don't of know. civilizations like that. yeah. I mean, most of southern Africa, and then also parts of Arabia. Yeah. Before. Okay. So around us are a lot of statues, and each of them is a Bodhisattva. Each of them has their own story of how they became enlightened and how they get their own pet. And many times their pets just like normal animal. And many times their pets are like, magical animals that actually do not exist in real life. All right. Yeah, and it's each of them will have a special power that they Right. possess, and they serve a different purpose
And yeah, it's very interesting. About 36 or 108 Buddhist sattvas. Depends on what kind of branch of Buddhism you follow, but Right. yep, each of them is yeah, They all have different personalities. Look, their faces Yeah. are all different. very different. Some are fearsome, Yeah, others are happy, others are content. some like kind, Yeah. yeah, or like angry, Some are angry, yeah, some are contemplative. yeah. Very interesting. And that look at in So the animals that they're sitting on sort of reflect their personality or yes, reflect their power. yes. And on the top of that building Right? is the wheel of fortune. Oh, wow. So in Buddhist, we believe that Luansa is like, what do you call it? Like everybody's life, Fate. fate is like Destiny. it's like a will. Yeah. That's very dialectical. Yeah. And It you have is. dragons protecting it all over. Yes. Dragon. Dragons. Yes. Yeah, dragons. Yes. And what do the dragons symbolize? Scary Dragon. creatures? Dragon is the most powerful animal in our belief, I see. and they are totally like from our imagination. It's not like dragon in the West from like actual like dinosaur. Dragon here is totally different. I see. Yeah, and we believe that dragon came from like fish, kind of koi fish. And the koi fish, they were like lucky or have opportunity, or they grow their wisdom, and one day if they like overcome all of the hardship, that koi fish will become a dragon. I see. So that is why we equate the image of the koi fish to students. So if the student they pass their exam, they become dragon. Wow. That is when they become enlightened Wow. with knowledge. So I see. and dragon represent power and wisdom. So it could be good, it And could be magic as bad, and magic. Yes. It can fly, Yes. and it can make. There are many kinds of dragons. They can make fire, water, smoke, acid, even. But yeah, but mostly it represents power, wisdom, and it could be good or bad. Depends on how we use it. Right. So Vietnamese people, we originally have our own writing system. Right. And that was wiped out and erased during like 1,000 years of occupation from all kind of dynasty in the north. That's the Chinese. That's Chinese. Yes, like they intentionally they try to erase our culture by forcing marriage between Vietnamese and Chinese, and then they burn all of our books. I see. And then like they torture and imprison or even kill anybody that like has any knowledge about that. So over 1,000 years, like that knowledge die off and die off. We still have our speaking language, but our written language slowly lost. So The nowadays script is lost. the script is lost. Yeah. So in the north of Vietnam, there was a rock mountain that contained like a mysterious writing and painting in it, and a lot of like Vietnamese linguistics and like international linguistics came there and tried to make sense of those writings, but nobody had any clue yet. And until now, they still maintain a mysterious kind of. And you were meaning. telling me also that during the Chinese occupation, Yeah. they tried to force Confucius beliefs. Exactly. We were matriarchal before. Vietnam was matriarchal before for thousands of years, and we had a lot of belief in like goddesses and gods in our. We consider like the mother is very important. Mother hold all the power and will protect you and give children, give birth to the whole like earth. But then they impose patriarchal on us with like Confucianism, and that like conflict a lot with our belief in our society. Even to this day, we are still struggling, fighting against patriarchy and bringing back matriarchy. And that is why, like because we have that kind of traditional kind of history of that, in the revolutionary time, Ho Chi Minh tried to bring back the role of woman in the revolution. It's very important. And Speaking of which, yes. During the French period, in the 30s, if I'm not mistaken, there was also a big debate about Vietnamese womanhood Yes. related to Vietnamese nationalism and anti-colonialism. Yes. Can you tell me a little about that? So at that time, because of sexism and racism intertwined with each other in the colonialism time, Vietnamese women was terribly treated by French colonialists, and actually prostitution was brought
here and imposed on us by the colonialists. That's very important part of history. Prostitution is imposed on our society and turn our women into some kind of, commodity Yeah. for men. And when, we had tried to have a revolution, and we do have a tradition of women is very powerful, and we are capable of doing everything that we want. And so like we, the revolutionaries and Ho Chi Minh and many other communists, trying to bring back that knowledge that we lost and learn, teach people about class consciousness and encourage women to stand up and hold their power. And that's so like nearly from the day one of the revolution of Vietnam, women always have strong and very powerful kind of position in the revolution. And that even like the first election of Vietnam ever is 1946. Women immediately had the right to vote. There's no argue about that. It's obvious. There was no ever argue about the right of vote for women or anything. So, I see. And women's union in Vietnam is very powerful. Any woman that is over 18 years old is already a member of the women's union. And we have a political power that we can go help women, especially nowadays, to fight against domestic violence, sexism, patriarchal. Wow. So yeah, it's like that. It's very powerful. वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखें जी, हम साउथ चाइना सी आए में, ज़बरदस्त किस्म का बे है, नीला तरीन पानी है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है यहाँ खड़े होके। मेरा दिल चाह रहा है कि यहीं से छलांग मार के डुबकी मार दूँ, मगर छलांग काफ़ी बड़ी है, मेरा ख्याल है डुबकी इधर ना ही मारूँ तो बेहतर है, कहीं ऐसी जगह मारेंगे जहाँ पे आराम से ज़रा समुद्र तक पहुँच सके। मगर नीला खूबसूरत पानी है, साफ़ आसमान है, कोई पोल्यूशन नहीं नज़र आ रही, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वो देखें हरे हरे जो है वहाँ पे हिल्स हैं और दरख्त वगैरह हैं और सब्ज़ा है हर तरफ। रियली एब्सोल्युटली गॉर्जियस। ये देखें जी, एक फ़िशिंग का एरिया है जहाँ पे हम आए हैं, फ़िशिंग विलेज है, और हम भी ज़रा नीचे उतरने लगे हैं और समुंदर की साइड पे जाने लगे हैं। ये देखें जी, नौजवान समुंदर के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है मगर ट्राई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ से मैं पैसिफिक के अंदर गया, और अब देखें कि वियतनाम साइड से और क्या बना, ये मेरा पैर है। ओह मज़ा आ गया। देखें जी, अब मैं वियतनाम साइड से उसी ओशन को टच कर रहा हूँ जो मैंने अमेरिकन साइड से भी टच किया था। ज़बरदस्त बात है। ये बहुत सारी फ़िशिंग बोट्स हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं उस पर वियतनाम का झंडा वगैरह बना हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा है जी पैसिफिक ओशन को इस साइड से टच करके। जब मैं अमेरिका गया था और वहाँ से मैंने पैसिफिक ओशन में डुबकी लगाई थी तो ओए होए होए, वो तो इतना ठंडा पानी था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ठंडा था उस वक्त। मौसम भी कुछ ऐसा था, और वहाँ से पैसिफिक ओशन जो है वो जहाँ से मैंने बहरहाल उसको टच किया था, इट वाज फ्रीजिंग, रियली वेरी कोल्ड। मगर यहाँ पे बड़ा ही प्यारा टेम्परेचर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, कोई मसला ही नहीं है। इसमें तो डुबकी मारी जा सकती है, अगरचे मैं अभी अपने कच्छे नहीं लेके आया इसलिए मैं डुबकी नहीं मारूंगा अभी, मगर अदरवाइज बहुत अच्छा लग रहा है। All right, so this is the traditional boat for the south, the center, the south of Vietnam. We call it a taxi boat. So they use it to carry like human or stuff or fish back and forth from the shore to the main boat out there. Because it's like that's too shallow for the big boat to go all the way here. So they use this as a taxi boat, and this boat Taxis to the main. exactly taxi boat right out there in the ocean, and they made from bamboo, like this bamboo sticks. And then they just have a layer of tar inside and outside, like for waterproof. And then the top is this is like a water pipe for it. And yeah, they write out their name and their number, the code of their boat, so they would know like who owns this. Right. So, and they just leave this all day because nobody's gonna steal Take it away. anything. Yeah, just like leave Where it will here. they go? Yeah, where will they use it? Yeah. Yeah. Where are they going to go with it? ये चेक करें जी, जो प्लास्टिक पड़ा होता है उस प्लास्टिक को इकट्ठा करके उन्होंने एक राफ्ट, एक किश्ती बना दी है यहाँ पे। कैसी मज़ेदार किस्म की बात है। देखें, बोतलें भी लगी हुई हैं, साथ कुछ स्टायरोफोम लगा हुआ है, कुछ फट्टे लगे हुए हैं, और सब कुछ उन्होंने नायलॉन स्ट्रिंग से, नायलॉन की रोप से जो है वो बांध दिया है,
और इस तरह उन्होंने एक अपनी कश्ती बना दी, डू इट योर सेल्फ कश्ती। चेक किया आपने? नहीं जी, अब हम सड़क के किनारे बैठ गए हैं और यहाँ पे हम रिलैक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने हम रिलैक्स्ड हैं। और थोड़ी देर में हम यहाँ पे नारियल का जूस पियेंगे। क्यों महाविश, क्या पियेंगे? नारियल पानी। हाँ, नारियल पानी। कराची में भी बड़ा मिलता है। ये यहाँ पे पीछे बन रहा है, आप देख सकते हैं, वो बंदा जो है काट रहा है। ये हम वियतनाम से गुजर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सी फूड्स पड़े हुए हैं। हेलो, ये देखें जी, मुख्तलिफ़ किस्म के सी फूड, ज़रा गौर से देखिएगा।